Hello students, the question is the mutual inductance of two coils C1 and C2 is 20 millihenry. In coil C1, the current changes from 4 ampere to 0 in 0.2 seconds. If the resistance of coil C2 is 4 ohms, then the charge that flows through it per second will be option A 4.0 coulomb, option B 1.5 coulomb, option C 0.05 coulomb and option D 0.1 coulomb. So the problem is based on the topic electromagnetic induction and in particular the mutual induction. So there are two coils and we have to find out the charge that flows through the second coil per second. So first of all we have to calculate the EMF induced in the second coil. So the EMF is given by E2 equals to minus M21 I1 dI1 by dt. So the EMF induced in the second coil is given by this formula, where M21 is the mutual inductance, which is same for both the coils, and its value is given as 20 millihenry. Di by dt means the rate of change of current in the coil number 1. So for the coil number 1, the current changes from 4 to 0. It means that final value 0, initial value is 4, so 0 minus 4 upon dt, the time interval is given as 0.2 seconds. So solving this thing, so minus 4 into this minus sign, basically it cancels, so it becomes 4 into 20 into 10 raised to the power minus 3, because after converting this millihenry into henry we have to multiply it by 10 to the power minus 3 upon 0.2. So multiply here by 10 and remove this sign, and 2 cut with this 20, we get 10. So 4 into 10 into 10 to the power minus 3 into 10 is equal to 0.4 volts. So this is the EMF induced in the second coil, that is coil number 2. Now the current is given by, the current in the coil second is calculated by I equals to E2 upon R, where R is the resistance of the second coil and its value is given as 4 ohm. So here E2 is 0.4 volt, which we have calculated, R is 4 ohms, so this comes out to be 0.1 ampere, or we can say that charge is basically 0.1 coulomb per second. Current basically is equal to charge per unit time. So in this way we can say that the charge passing through the coil number 2 is 0.1 coulomb. So option D is correct here. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछी गई है. इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स की C1 C2 जिनके नेम है, वो वैल्यू गिवन है 20 मिली हेनरी. कॉइल C1 में करंट चेंज होती है 4 एम्पियर से 0.2 सेकेंड के अंदर. अगर रेजिस्टेंस कॉइल C2 की 4 ओम है, तब हमें बताना है कि चार्ज जो फ्लो होगा कॉइल नंबर 2 में पर सेकेंड वो कितना होगा. तो उस केस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने हैं. E2 इंड्यूस EMF इन द सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस di बाई dt. यहाँ पे जो करंट का रेट ऑफ चेंज है वो कॉइल 1 में लिया जाएगा, क्योंकि कॉइल 1 में जो करंट में चेंज हुआ उसी की वजह से एक इंड्यूस्ड EMF जो है डेवलप हुआ इन कॉइल 2. तो यहाँ पे फाइनल करंट की वैल्यू 0 है और इनिशियल करंट की वैल्यू 4 है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 0 माइनस 4. 20 मिली हेनरी इज द वैल्यू ऑफ द 20 मिली हेनरी वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस की. इसको हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करके. फर्दर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.4 वोल्ट. EMF की वैल्यू आती है. आंसर में एक्चुअली हमसे चार्ज पूछा गया है. सबसे पहले हम करंट निकालेंगे. करंट बराबर होती है EMF अपॉन रेजिस्टेंस. इसे हम ओम्स लॉ से समझ सकते हैं. EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. दिस इज द ओम्स लॉ. तो यहाँ से I बराबर E2 अपॉन R. E2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.4 वोल्ट्स अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 ओम्स. तो इससे कैलकुलेट होती है करंट 0.1 एम्पियर. 0.1 एम्पियर की करंट को हम 0.1 कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं, और हमसे पर सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है वही पूछा जा रहा है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं 0.1 कूलम इज द आंसर. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.